नमस्कार. Akh Shlook Aki Doh. A Shloka a day. एक श्लोक एक दिन. आपकी सुविधा के लिए तीनों भाषाओं में मेरा प्रयास है कि मैं कुछ अभिव्यक्ति कर पाऊँ जो कि मैं समझता हूँ एक दिव्य आदेश है, परम गुरुओं से दिव्य आदेश है. So, proceeding towards another shloka from the treatise Panchastawi, today I am taking up from second chapter, 15th shloka, which goes like this. सुरासुर गुरु पुरुषः पुराणः यद्वामर्धम् अन्धकसूदनस्य देवी त्वमेव तदिति प्रतिपादयन्ति. योऽयं चकास्ति गगनार्णवरत्नमिन्दुः योऽयं सुरासुर गुरुः पुरुषः पुराणः यद्वामर्धमिदमन्धकसूदनस्य देवी त्वमेव प्रतिपादयन्ति. So, its meaning goes like this. हे देवी, जो ये आकाश, चिदाकाश रूपी समुद्र का रत्न चंद्रमा चमकता है, जो यह देवताओं तथा राक्षसों का गुरु आदि सिद्ध पुरुष है, तथा जो कामदेव के मारने वाले शिव का यह बायां शरीर का आधा भाग है, यह सभी कुछ तुम ही तो हो, इस बात को सिद्ध करते हैं. How beautifully the poet Dharmacharya has put it. So, from all sides, from any angle, we have to remember the goddess Mahatripura Sundari. Mahatripura Sundari, if remembered, balances all the three triads within our psychological arena. The realms of psychology are governed by desire, knowledge and action. Icha, Gyan or Kriya. Aim, Kleem, Saur. 3 Bijaksharas, 3 seed letters, when resonated within, bless us, grace us, and hence again it's proved that the goddess, most compassionate goddess Mahatripura Sundari, always act like a mother to this entire universe. Om Mahatripura Sundaryai Namah.